Hello everyone, I hope all of you are in good health and doing absolutely fine. Aspirants, through this video, I want to connect to all those students who are targeting Civil Services Examination 2021. Students, we are already in the month of November and it is high time that we start our preparation now in a more comprehensive fashion. And what do I mean by that? Now, there is a major problem with respect to the preparation strategy of most of the students is that though they prepare for the sake of preparation, they do not test their preparation regularly. In simple words, वो पढ़ते तो बहुत हैं, but वो test नहीं देते. And this backfires during the day of the examination because they are ready with the knowledge but they are not exam ready. Friends, after all, this is a competitive examination. So the sole focus should be on the examination. You gather knowledge as you prepare, but unless you test that knowledge, you do not know that whether the knowledge that you are carrying is actually reliable or not, useful or not. And further, when you test your knowledge, through that testing you get new knowledge. एक जनरल पैटर्न ये है स्टूडेंट्स के बीच में कि पहले प्री की पूरी तैयारी कर लेंगे, देन वी विल गो फॉर द प्री टेस्ट्स एंड वंस वी आर डन विद आवर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल गो फॉर द मेंस टेस्ट. दिस इज अ big issue with many aspirants. Why? Because this examination is not a compartmentalized examination. इसमें हमको प्री और मेंस को अलग करके नहीं देखना चाहिए. In fact, it is a comprehensive integrated examination. और जब आप अपने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो उससे पहले यू शुड बी टेस्ट रेडी इवन फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन. एंड इफ दैट इज नॉट द केस then definitely you are going to struggle in the mains examination. क्योंकि प्री और मेंस के बीच में जो टाइम पीरियड होता है आपके पास, that is only enough for revision. That is not enough for attaining new knowledge, and new knowledge also include writing skills. And therefore, you should polish your writing skills with respect to the mains examination before the preliminary examination. प्री और मेंस के बीच में आप सिर्फ कुछ मॉक टेस्ट्स दीजिए जिससे आप ये चेक कर सको कि आप कितने रेडी हो. एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जब प्री और मेंस के बीच में आप मेंस की टेस्ट सीरीज करते हो, उसमें कुछ सेक्शनल टेस्ट्स होते हैं और जो एग्जाम है उसमें तो GS1, GS2, GS3, GS4 ऐसे सब्जेक्ट्स आने हैं, लेकिन आपने टेस्ट दिया है हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, अलग अलग करके दिया है, तो आपके माइंडसेट वैसा बन जाता है that it creates a sectional mindset and you have not given enough mock test, whereas in the mains examination the mindset that you require is a mock test kind of mindset. And to avert all such eventualities or to avert all such negative possibilities for you, Eden IAS has designed a comprehensive program of tests for preliminary examination and the mains examination. Let's have a look at it. So, here at Eden IAS, we have designed a comprehensive package of 51 tests to make you exam ready. Out of those 51, 31 tests belong to the preliminary examination and 20 tests are for the civil services main examination. जो प्री के टेस्ट हैं, it covers every section of the syllabus. तो कुछ sectional टेस्ट होंगे पहले आपके. Then you would give mock tests. There would be mock test for GS as well as CSAT. Plus, there would be some special tests on current affairs. क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि करंट अफेयर्स आप पढ़ते तो बहुत हो, लेकिन जब प्री में अप्लाई करने की बारी आती है यू स्ट्रगल. व्हाई? क्योंकि आपने उस करंट अफेयर को कभी एक क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं एड्रेस किया है. एंड देयरफॉर टू मेक यू रेडी on that aspect, some tests have been designed which are specifically targeting the current affairs section.
तो इन 31 टेस्ट से what you will get is you will understand that where you stand with respect to your preparation, plus you would get new knowledge with respect to the preliminary examination. The mock tests are all India tests or all India level mock tests where you will understand कि आप कहाँ पर stand करते हो vis-a-vis अदर कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो तो ऑल इंडिया लेवल पे बन रहा है. एंड देयरफॉर टू गिव यू दैट फीलिंग और टू make you realize that what is actually you are fighting for, the mock tests would be all India tests. So the sectional tests are more targeting towards your learning, whereas the mock tests are making you exam ready, and plus there are some current affairs tests. Clear? That is all about the preliminary examination. In the mains examination, we have 10 sectional tests through which we are covering GS 1, 2, 3 and 4. We have 2 tests on essay and we have 8 mock tests on GS papers. Now, there is a catch in these 20 tests. देखो, ये टेस्ट को ऐसे डिजाइन किया गया है जिससे कि ये टेस्ट आपको लर्निंग में मदद करे. इट शुड नॉट क्रिएट एन एक्स्ट्रा बर्डन ओवर यू. Mostly what happens is students, they apply for so many tests that they get a lot of syllabus of all such tests and it create a kind of so much burden over the aspirant कि बाद में वो टेस्ट देना ही छोड़ देते हैं and the entire purpose gets defeated. So what we have done here is that first you will go through the sectional test, the 10 sectional tests, and you would do that बिफोर योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. मतलब आप जीएस के सारे सेक्शनल टेस्ट आपके 2021 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से पहले ही कर लोगे. एंड बिटवीन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड द सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन 2021 आप सिर्फ मॉक टेस्ट दोगे और एसे पे टेस्ट दोगे. सो बिटवीन दैट टाइम पीरियड यू वुड बी एग्जाम रेडी. Do you understand that? Rather than learning new content. क्योंकि sectional test से सिर्फ आपको ये मदद मिलता है कि what you are learning from the test. But in the mock test, it is not about learning, it is more about performance. And remember that it is on the basis of your performance that you get your selection. तो ये test हम कैसे करेंगे? First, you will get a detailed syllabus of the test. But keep this in mind that your pre-tests and your mains tests, they are going parallelly and they have been designed in such a way that the syllabus of the week which has been given for the pre-examination has a direct overlap with the syllabus of the mains that has been given for the week. इसका मतलब आपको सिलेबस के बीच में जूझना नहीं होता. आप एक ही चीज पढ़ते हो, उसमें ही आप अपना प्री माइंडसेट और मेंस आंसर राइटिंग स्किल्स दोनों डेवलप करते हुए चलते हो. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट द सिलेबस फॉर प्री एंड मेंस आर मूविंग पैरेलली. ये पहला एडवांटेज है. सेकंड इज दैट फॉर ऑल द सेक्शनल टेस्ट एंड फॉर एसे राइटिंग आई विल कंडक्ट लाइव सेशंस वेयर आई वुड डिकोड the syllabus that has been given to you. कई बार ये होता है कि सिलेबस को आप देखते हो और आप सब कुछ पढ़ने लगते हो उसके जो भी उससे रिलेटेड है. एंड व्हेन यू डू दैट यू मूव अवे फ्रॉम द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन. लेकिन जब हम सिलेबस को डिकोड करेंगे लाइव सेशंस में वेयर आई विल टेक क्वेश्चंस फ्रॉम यू, इट वुड बी मोर ओरिएंटेड फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू. आप अपने डाउट्स पूछिए मुझे, कौन से टॉपिक में आप स्ट्रगल कर रहे हैं आप मुझसे वो बताइए. Then we will try to decode that syllabus and we'll try to see that what kind of questions can arise from it. इससे हमारा एक mindset बन जाएगा पहले ही टेस्ट से कि टेस्ट कैसा हो सकता है. And then on the basis of that preparation we will go into the sectional test. जैसे आप अपना sectional test दोगे, आपके अगले sectional test से पहले you will get your evaluated copies. The copies would be thoroughly evaluated, checked, and there are certain parameters on the basis of which the checking would be done. Now, what are these parameters? First is
we will check the content of your answers कि जो आप content produce कर रहे हो वो कैसा है, average है, अच्छा है, excellent है. We'll try to check that. Second, we'll see that how much is your answer in context with the question. मतलब क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट कुछ और ही है और आपने कुछ और ही लिख दिया है. सो विल चेक दैट एज वेल. विल ऑल्सो सी दैट वेदर यू हैव अंडरस्टूड द कमांड ऑफ द क्वेश्चन. कई क्वेश्चंस में आप देखोगे तरह तरह के कमांड होते हैं, लाइक सब्सटैंशिएट, एलुसिडेट, एग्जामिन, इवैल्यूएट, क्रिटिकली एग्जामाइन, एनालाइज. सो तरह तरह के कमांड्स होते हैं. तो विल सी दैट वेदर यू हैव अंडरस्टूड द कमांड और नॉट. Then we'll see that whether your arguments have a logical flow. इट मीन्स स्ट्रक्चर कैसा है आपके आंसर का, मतलब इंट्रोडक्शन में जो होना चाहिए वो है या नहीं, बॉडी में जो होना चाहिए वो है या नहीं, कंक्लूजन में जो होना चाहिए वो है या नहीं. We'll also check the presentation of your answers, whether you have used some charts, graphs, maps, etc. to improve the presentation of your answers, or you have used some facts to give more weightage to your arguments. And then finally, we will check that how much you have attempted, or we will give you a feedback with respect to whether your attempt was an average attempt or it was an extraordinary attempt. This would be given by keeping in mind how others have performed and the standard of questions that were there for that test. देखो कई बार ऐसा होता है कि aspirants ये करते हैं कि they leave 4 questions, say for example in every GS paper. 4 questions mean, suppose if they are 15 markers, then 60 mark is what you have left in every paper, and counted by 4 papers it becomes 240. It means you have not given 1 GS paper. और ये तभी होगा जब आप एग्जाम को एग्जाम के वक्त प्रिपेयर करोगे, उससे पहले से नहीं प्रिपेयर करोगे, तो यही होगा आपके साथ. एंड इफ दैट हैपेंस देन फॉरगेट अबाउट योर सिलेक्शन. रैंक तो बहुत दूर की बात है. फॉरगेट अबाउट योर सिलेक्शन बिकॉज यू आर लीविंग ऑलमोस्ट द अमाउंट ऑफ 1 GS पेपर. After you get your evaluated copies, you will have mentoring sessions. There is a team of mentors under me, so I will be one of the mentors, and there are other mentors as well, and we will have a one-to-one interaction with you where you would have your copy with yourself so that we can analyze one more time कि आपसे क्या गलतियां हुई थी. तो देखो ये एक डिजास्टर मैनेजमेंट जैसा टेक्निक है. पहले तो हम एक प्री डिजास्टर प्रिपरेशन कर रहे हैं कि हम डिकोड कर रहे हैं सिलेबस को, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसा क्वेश्चन हो सकता है, किस तरीके के टेस्ट में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं. देन वी आर गिविंग यू अ फीडबैक ऑन योर परफॉर्मेंस एंड देन वी आर एनालाइजिंग इट सो दैट वी कैन लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स. Clear? One thing that you need to keep in mind is that these 4 steps are integrated. So the 10 sessions would be dedicated to decoding the syllabus of the 10 sectional tests on GS. कुछ tests के mentoring तो it would be under me directly, like say for example GS paper 4, the geography portion of GS paper 1, the economy portion, the environment portion of GS paper 3, the international relations of GS paper 2, polity constitution. Some of them would be done by me, others would be done by other mentors. The program commences from 8th of November and it would be both online and offline. देखो एक जो सबसे बड़ी गलती होती है हमसे is that we wait a lot. We wait for that one fine day when we will start giving tests, and this creates a test phobia in us. और इस टेस्ट फोबिया की वजह से ही मोस्टली वी अंडर परफॉर्म इन द एग्जामिनेशंस. सो दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज. सो अवेल इट so that you can learn and be exam ready before the mains examination. और जब आपका मेंस एग्जामिनेशन आएगा you can go full throttle. One special class would be conducted on the art of essay writing because essay is an important aspect of your examination. So this program, I think if you follow what has been said into it, it's a year-long program, comprehensive 51 tests. I think you would be exam ready. To
keep the significance of the program alive and by keeping the health interests of the students in mind, we have decided that for every batch we will only admit 50 students so that we can give a personalized attention to every student. One basic feature during the mentoring sessions is to work on your strengths. Every student has some unique strength and we need to polish that strength. Mostly what happens is there is a generalized approach, especially in the discussion classes, and under that the student loses control of his or her own strength. And it is very important to succeed in life that you work on your strengths and you improve your weaknesses. Clear? So this is what would be done in the mentoring sessions. Well, the name of this program is, जिसके लिए अभी पूरी दुनिया वेट कर रही है, vaccine. So the name of this program is Test Vaccine Prelims and Mains 2021. You can check the syllabus and the detailed breakup for the prelims and the sectional tests of mains and mock tests in the description of this video. So thank you very much, and I wish all the very best to all of you regarding prelims and mains 2021.